Hello बच्चों, let us read this question. Consider a complex number w equals z minus iota divided by 2z plus 1, where z equals x plus iota y and x and y are real numbers. If the complex number is purely imaginary, then the locus of z is which of the following given options? Now, to solve this problem, the key concept that will be required is to understand when will a complex number be purely imaginary. So I believe you have in mind that if you have a complex number a plus iota b, which is purely imaginary, that means basically iota b is the part that exists. So this real part does not exist. That means a will be equal to 0. So for any complex number z, if it is going to be a purely imaginary complex number, then the real part of that complex number z must be equal to 0. That is the key concept that will be required to solve this particular question. Now let us see. W is given as z minus iota divided by 2z plus 1. Let us try and simplify this. So W is equal to z minus iota divided by 2z plus 1. Of course, in place of z, we are going to put x plus iy divided by, again, 2 times x plus iota y plus 1. This equals x plus iota times y minus 1 divided by 2x plus 1 plus iota times 2y, because you can see that the real and imaginary part, they need to be separated. In case of a division or a fraction or a quotient of complex numbers, all you need to do in order to express or establish this in the a plus ib form is इसको आपको इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. So you have to multiply this with 2x plus 1 minus iota times 2y. ऊपर नीचे 2x plus 1 minus iota times 2y से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. So once you do that, you are getting x multiplied by 2x plus 1, then minus iota times x multiplied by 2y plus iota times y minus 1 multiplied by 2x plus 1. Of course, minus iota squared will become plus 1 multiplied by 2y times y minus 1, entirely divided by a plus b times a minus b. इस फॉर्म से हमें मिलता है 2x plus 1 whole squared minus I squared times 2y whole squared, और I squared होता है plus 1, so this becomes positive. Now observe, इस चीज को अगर हम रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करते हैं, then quite clearly the real part of W which needs to be made equal to 0. तो हमें इमेजिनरी पार्ट लेके कोई हेडेक नहीं लेना है. सिर्फ इसका रियल पार्ट को आप आइसोलेट करके निकाल के लाओ और इसको इक्वल टू 0 कर दो. So this is basically x times 2x plus 1 plus 2y times y minus 1 entirely divided by 2x plus 1 whole squared plus 2y whole squared. This is going to be equal to 0 because this is the concept here, the key concept. A real part of the complex number which is purely imaginary is going to be equal to 0. अब यहीं से हम लोग सिंप्लीफाई करके देखेंगे कि इसका कार्टेशियन इक्वेशन जो है वो क्या आ रहा है. Let us see. From here, this denominator multiplied by 0, ये ऊपर चला जाएगा. We'll be having 2x squared plus x plus 2y squared minus 2y equal to 0. Quite clearly, both side 2 से डिवाइड करने से हमें मिलती है x squared plus half x plus y squared minus y equal to 0. थोड़ा सा rearrangement, and I think it's very clear to all of you that this is basically equation of a circle, x squared plus y squared plus half x
माइनस वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी हमें अप्लाई करना पड़ रहा है, विच ऑब्वियसली यू डू नो, दैट इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। फ्रॉम दैट हम लोग सेंटर और रेडियस को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो यू मस्ट बी रिमेंबरिंग दैट द जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इज गिवन बाय x squared plus y squared plus 2gx plus 2fy plus c इक्वल्स 0। और यहाँ से सर्कल का जो सेंटर होता है वो मिलता है हमें माइनस जी कॉमा माइनस एफ इससे, और सर्कल का जो रेडियस होता है दैट इज ऑब्टेन्ड बाय द फॉर्मूला रूट ओवर जी स्क्वायर्ड प्लस एफ स्क्वायर्ड माइनस सी। माइनस वाई इक्वल्स 0। इन दोनों को कंपेयर करने से क्लियरली वी कैन सी द 2g इज इक्वल टू हाफ, मतलब g इक्वल टू 1/4 and 2f equals -1, which means f equals -half. Also, यहाँ से radius turns out to be root over g squared, which is 1/16 plus f squared, which is 1/4 minus c, और यहाँ पे c कुछ है नहीं, मतलब constant term is 0, तो simply यहाँ पे 0 बैठा देंगे, which is equal to root over, I think ये हो जाएगा 1/16 plus 4/16 is nothing but root 5 divided by 4. Quite clearly हमें दिख रहा है कि सेंटर ऑफ दिस सर्कल, ये एक सर्कल होगा जिसका सेंटर होगा माइनस जी मतलब -1/4 कॉमा माइनस एफ मतलब प्लस हाफ, -1/4 कॉमा प्लस हाफ। ऑल्सो इस सर्कल का रेडियस हो जाएगा रूट ओवर 5 डिवाइडेड बाई 4 यूनिट्स। अब हम लोग देखेंगे ये आंसर, ये ऑप्शन दिया हुआ है कि नहीं। एंड ऑब्वियसली द सेकंड ऑप्शन यू कैन सी ऑप्शन बी, अ सर्कल विद सेंटर -1/4 कॉमा हाफ, जो हमें मिल चुका है -1/4 कॉमा हाफ। ऑल्सो द रेडियस is root over 5/4 units. Therefore, option B is the correct answer to this question. This is how we solve this problem. I hope you understood the solution. Best of luck.